Hi guys, it's Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today we are going to discuss as to how can you prepare for your CLAT exam in the last 6 months for absolute scratch. If you have not yet started your CLAT preparation, so I'm going to give you a guidance as to how can you start your preparation. So there are certain pointers that I have made for you guys to make you guys understand कि आप अपना preparation start कैसे कर सकते हो and how can you proceed with it as well. ठीक है, आगे जाकर in the coming months how can you proceed with it, how can you make it better, how can you make yourself better is something we're going to be discussing in this session. Now before starting this session, I think it becomes very important for you guys to understand that if you start your preparation in the last 6 months, there will be a lot of people जो आपसे पहले से prepare कर रहे हैं. There are some people who in fact prepare for last 2 years. There are somebody who is preparing for last 1 year. So it is very natural to feel intimidated in the sense कि भाई हमारा कैसे होएगा, because there is some other person who has been preparing for quite some time. So शायद हमारे कम chances हैं and that crosses all of our minds. I think that is a very wrong way of thinking about it because अगर आप CLAT के लिए 6 months if you given a lot of hard work into it, you will definitely be able to do it. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने 2 साल प्रिपेयर किया है तो उसके पास आपके ऊपर एक एडवांटेज है. इट्स जस्ट दैट कि दैट पर्सन नोज आई थिंक अ लिटिल बिट मोर अबाउट CLAT एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क बिकॉज दे हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन प्रायर टू यू. बट आप वो अब जान लोगे, इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, उनको पहले से पता था और आप अब जान लोगे. सो when you start the preparation, this is for everybody, you find it difficult only because starting से you're not used to preparing for a particular exam, so थोड़ा सा difficult लगता है. But when you become a part of that process और आप जब वो एक या 2 महीने निकाल लेते हो, when you understand the kind of questions that are asked, when you understand different sections in the exam, then it becomes slightly easier because you get used to the preparation. So पहले से ये सोच के नहीं चलना है कि हमारा नहीं ही होगा और हमारी कम ही रैंक आएगी. That is a very negative way to start your preparation. Okay, so never think about it, just be very sure about your capabilities and back it with full hard work. Now the most important habit that any CLAT aspirant needs to inculcate is reading newspapers. I think ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, and it has been given a lot of I would say preference or I would say a lot of I would say emphasis on this particular thing कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई शॉर्टकट ही नहीं है. And making notes of out of the newspapers because obviously they will help you with your current affairs, the kind of questions that are asked in critical reasoning, vocabulary, everything, right? So they will keep you in touch with as to what is happening around media में आजकल बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है. All of that are there in the newspapers, right? So newspapers के लिए I think you would know that I have been putting the headlines on my Telegram channel as well, so you can follow us there every day where you will understand कि आज द हिंदू में से पढ़ना क्या है. Okay. Now, other than that, it's very important to understand कि हम लोग particular sections को कैसे cover करें, है ना? So before you start your preparation, go to the CLAT Consortium website. Try to understand as to what they expect of us under the new pattern. ठीक है? So they have clearly given us certain small videos. They have given us certain descriptive articles wherein they have actually made us understand as to what is expected of us. For example, when you talk about the current affairs they want कि जो static GK वाला part है, they would like you to understand every current affair with its static part, basically उसके background story के साथ सब कुछ. That is how we do our current affairs video on 12 minutes to CLAT, as well as I think you would know that I have been teaching on Unacademy, so there are a lot of classes that I have been taking on current affairs as well. मैंने कुछ classes के links description में भी लगा दिए, so those are free classes that you can attend and you can understand the kind of questions that are asked, the kind of preparation you need to do. You can in fact enroll for some of the new batches also that we are going to be starting and you can become a part of the preparation. If you like my style of teaching, I will be guiding you particularly for legal reasoning as well as current affairs, which covers 50% of the syllabus, right? You can in fact use my code Malpani or Keshav Live and get 10% off on the Unacademy subscription as well. So as I told you, newspaper reading in the next 6 months is going to be very important for all of you. और अगर आप अभी भी start करते हो ना, so this is not very late. हमको कई बार लगता है कि यार रीडिंग स्पीड इज स्लो और एफिशिएंसी इज लो बिकॉज वी हैव नेवर ट्राइड रीडिंग प्रॉपर्ली. बट अगर हम अभी भी स्टार्ट कर देंगे सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. बिलीव मी, यू कैन स्टिल डू इट. नाउ इट इज जनरली बिलीव्ड कि अगर आपको CLAT के लिए प्रिपेयर करना है सो यू नीड टू कवर मोर करंट अफेयर्स देन जस्ट लास्ट 6 months. तो जो आपका बैकलॉग हो गया है ना, try covering that backlog using the compendium that I keep suggesting every now and then, the Drishti IAS compendium, the Vision IAS compendium, the 12 minutes to CLAT compendium that we keep releasing on our Telegram channel every month, right? You can also connect to my classes on Unacademy as well, जिसके मैंने links description में दे रखे हैं. So these are certain ways where you can cover your backlog and always make notes. ठीक है? Now another emphasis that I would like to give in the last 6 months is on the mock tests. Very important. मॉक टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे. इट्स नॉन नेगोशिएबल. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मॉक टेस्ट,
I tell you, give full mock test. You can do 2 mock tests per week, right? 2 mock tests are, I think, doable. एंड कई सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं इनमें वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनके सेक्शनल टेस्ट भी करो ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, ताकि आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओ और आपकी स्पीड भी उसमें धीरे धीरे बढ़ जाए, राइट? सो मेक श्योर यू डू फुल मॉक टेस्ट एज वेल एज सर्टेन सेक्शनल टेस्ट एज वेल. That will make a lot of difference in your CLAT preparation in the last 6 months particularly. Also, I think a lot of people who have now taken a decision to write CLAT they could be in 12th standard as well. अब थोड़ा difficult हो जाता है अंदर the new education policy की 2 board exams हैं, right? And then we have the CLAT preparation as well. So how to manage it? See, let me tell you very frankly, every year most of the students who clear CLAT exam, I would say at least 50 to 60% people are 12th standard students only. ठीक है? So what you can do is you can have certain daily plans, or I would say weekly plans, whatever suit you, and you can just stick to those plans. Okay, consistency is going to be the key. I understand 12th class preparation is very important, but उसके साथ साथ your CLAT preparation is going to take your time. So what I used to do is I used to understand कि what are the things that I'm wasting most of my time during the day. Generally those things used to be could be your social media, right? Mobile phone could be Facebook, Instagram, and so on. Right? If you are heading out too much out of your house for no reason, just to hang out with your friends, maybe you can reduce on that time and inculcate that habit into reading or maybe preparing for CLAT, right? तो जहाँ पर हमारा थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, we need to get really sincere in the last 6 months and we need to invest that time in something important. And that important thing could be your CLAT preparation, it could be your 12th preparation as well, right? तो दोनों के लिए एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा with a proper schedule. और कोशिश क्या करो कि हर चीज को लिख लो, उससे ज्यादा क्लैरिटी आती है कि हमको आज पूरे दिन में करना क्या है. एंड एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोर्सेज को समझना, हमारी जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, उसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए दी फर्स्ट रिसोर्स इज द CLAT कंसोर्टियम का वेबसाइट. जाओ वहां पर, लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड, लुक एट द पास्ट 2 years पेपर एज वेल. ठीक है, जो भी नए पैटर्न में पेपर हुए हैं वो भी देखने की कोशिश करो और समझो एट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड. देखो एग्जाम में क्या होता है, अगर हम सिर्फ उसमें छलांग लगा देते हैं कि बस पढ़ लेते हैं, जो भी सिलेबस है उसको कवर कर लेते हैं, ऐसे कोई सिलेबस पर्टिकुलरली CLAT का है नहीं. सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस यू अंडरस्टैंड, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दिस इज हाउ आई हैव टू प्रिपेयर, राइट? वो काफी क्लैरिटी दे देता है आपके दिमाग में व्हेन यू लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज दैट इज द जनरल ट्रेंड. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लास्ट 6 months इज टू बिलीव इन योर एबिलिटीज. अगर आपको सच में लगता है कि आप कर पाओगे, right? If you definitely believe that you have that capability to work hard, ठीक है, you don't have to be the smartest guy in your class or the smartest girl in your class. You do not have to be the smartest person ever. आपकी reading speed अच्छी होने की जरूरत नहीं है. But if you are ready to work hard and improve on all those things जो आपको पता है कि are your weak zones, are your issues, this is definitely going to be quite fruitful for you, because I always keep saying this, आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है CLAT क्लियर करने के लिए. You just have to be hard working and you just have to be consistent about the preparation, because see, when you talk about subjects like say current affairs and all, रोज कुछ ना कुछ होता जा रहा है, राइट? रोज कुछ ना कुछ होता जा रहा है. सो वी नीड टू बी रियली कंसिस्टेंट while we make notes, we need to be very consistent while we analyze our mock test. ठीक है, मॉक टेस्ट देके छोड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है. You will not be able to improve the next time. तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? सो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है इसमें. यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, एंड दोज बेसिक्स आर डूइंग द बेसिक थिंग जो होती है ना, जो हम रोज CLAT के लिए करते हैं, प्रिपेयरिंग, हार्ड वर्किंग, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाना, नोट्स बना लेना, मॉक टेस्ट को एनालाइज कर लेना, वो डेली बेसिस पर करना. बिकॉज लेट मी टेल यू, 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स आर नॉट डूइंग दैट. आस्क योरसेल्फ इफ यू आर डूइंग दैट ऑन अ डेली बेसिस, राइट? अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट डूइंग दैट एंड मेक योर प्रिपरेशन बेटर. दैट्स इट अबाउट द सेशन फ्रॉम माय साइड. इफ यू लाइक आवर सेशंस, please subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.